teaching responsibility. Professor Madhurudhan Rao has been actively involved in various industry collaborations and consultancy projects. His work often bridges the gap between theoretical research and practical application, ensuring that his innovations benefit the society at large. His contributions to the development and implementation of assistive technologies are particularly noteworthy, reflecting his commitment to creating inclusive and accessible solutions for all. We are indeed fortunate to have Professor P.V. Madhusoodan Rao with us today. His insights and expertise will provide valuable perspectives on the challenges and opportunities in the field of assistive technologies for equitable and inclusive education. I welcome you, sir. Thank you. Thanks for the introduction. So let me share my slides. So what is the total number of participants? 30. So there are 30 participants. 30, okay. So we can start, correct? We don't have to wait. Okay. So I think I probably need a permission to share my screen. Yeah, now it's on. Thank you. Are you able to see my screen? Yes, sir, we are able to see your screen. Okay, thank you. So thanks for giving me this opportunity to share and also exchange ideas with you on this very important subject of assistive technologies for inclusive education. I am assuming that all the participants and all the people who are attending today are either teachers or professors in schools and colleges. Is that correct? Or sorry to ask. Yes, the students and the faculty members are attending the. Yeah, mostly faculty, correct? All the participants. Okay. Yeah. So what I'll do is maybe we can start with a small exercise. Exercise in the sense that I want you to think a little bit before we start the lecture. Schools, colleges, and universities, and all of you would go to a classroom and take classes for students. So for the time being, I want you to imagine that when you go to a class and if you find, let's say, there are some students who are with certain type of disabilities. It could be visual disability, or it could be locomotor, or it could be speech and hearing, or could be any for that matter. Let's say some of your students are there. How do you make your class or how do you see that all the students get the same experience in your class? I just wanted you to imagine that you are taking a class and there are students. So what are the challenges you face, and
what are the kind of solutions or what are the kind of things which you do to make the class which is inclusive? So what I'll do is I'll probably ask you to one moment. I'll ask you to put your whatever you want to say. Either you can probably unmute and say, or other option is you can actually put it in the chat box. So anybody would like to start? Any of the participants or faculty would like to say something or put it on the chat box? You can at least write down what are the challenges which you face. I just wanted to know whether they can actually put it in the chat box, participants, or they can say something by unmuting. Sir, I'm audible? Yes. Sir, this is Dr. Rohit Sharma. Sir, we face the basic problem. See, now we are admitting the students who are speechless. I mean, they have some hearing and speechless kind of. So we need some sign language interpreters. Now, this is something which is a very tedious problem because nowadays the sign language interpreters are not there. And if they are there only, then they are for the class only itself. And for the rest of the time and for... so we don't have that. We are still in a process of developing an app that could make them interact with the normal persons. But this is something which we are facing because interpreters are... they are not available and they can't be available for 24 hours. Yes. That is something which is a basic first problem. First problem. And Yeah. we have another one that there are few students like
one few students are also have joined, so they have some visual impairment, and uh, say they don't have one eye or this kind of thing. So these students are they face the problem uh, clearly visualizing the what we have written in the blackboard and chalking up. So that these kind of things are there. So these are the two problems: sign language and Yeah. clear visibility, clear visuality of the. So what we do, we just keep those kids in the first row and make them. I mean, the situations favorable. So how they can interpret and visualize these things in the class. These are the Okay. two things, but still we need some technical solutions to overcome these problems. We are in the process of developing an app. We have almost developed an app, so that is one solution. But still, we are working on it. Okay. Okay. Thank you, Rohit Sharma ji. So I think you are also an organizer and faculty there. Yes. I'm But, coordinating the FDP. anything from other people? Yes. See, one more thing is that the maximum number of the young students are from our institutes only, because No, that's okay. But I'm not referring to only that. All the okay, people who have joined in this particular program, definitely. correct? They also may be having students, or they will have in future uh, students with certain type of disability, or they may have had. So I'm asking them to imagine and tell what challenges come. Or is it that people just logged in but not participating? But the participants can actually put things and chat, correct? Is that permitted, or is it disabled? Okay, Pankaj Kumar Yadav ji is saying same problem as that of Rohit. Yeah, ठीक है. So, okay, the two problem mentioned by Rohit ji is very genuine, but I think just solving these two will not make our classrooms inclusive. There may be more. Okay, any more? What we'll do is, looks like people, I don't know, are not in a mood to participate. Uh, okay, we'll take up these two, and let's see if people still have more challenges than these two. They can actually post it on the chat window if they have, so that we can actually take it up. Okay. So, because I think we wanted to make this as participative as possible, uh, not just for the sake of certificates. Okay. So let me take the first one. Like Rohit ji mentioned that we need sign language interpreter. That is very true. Okay. So
let's take the sign language interpreter case first. Firstly, there are not many sign language interpreters, and having them for every class is also sometimes not very practical and affordable. So there are some solutions which people have been using. Some are very primitive and some are advanced. Like, so one of the things I know, a few students in Delhi who are there, what they do is they carry their mobile. Mobile has speech to text option, and they switch on when the teacher is actually speaking. So as the teacher speaks, this mobile app, even Google has a mobile app, which actually basically whatever is the audio which is coming from the teacher or other students is converted to text, and they can actually at least know what is happening in the class. This is not a complete accessibility, but it is probably a first stage in the accessibility. Now, one of the problems with using such a solution where mobile can convert what teacher is speaking into text is, as the teacher is speaking, you are actually looking at the mobile, not at the teacher. And in order to know what teacher wants to communicate, it is also important to know the body language of teacher, the gestures, they all become very important. But since I'm getting the information through mobile, so my head is always down looking at the mobile. So I only get a part of the information. There is only a part of the information, which are only the spoken words, which I can access as a student in the class. So one of the solutions which is being proposed now is to have probably a special goggles, a special spectacles, special wearables, and this speech to text is actually converted using a device which is sitting in the goggle but not in the mobile. So what happens is through spectacles, I am seeing the teacher. At the same time, on my spectacle, a display of spoken words also come. It is displayed on the spectacle itself. So that means you are doing two things simultaneously. One is you are also seeing the teacher, and you are also reading the spoken words of a teacher, which comes on my glass as a display. This is slightly better because just relying only on the spoken words, you can also understand the body language of a teacher and do few more things. So there is a startup which is called Transcribe Glass. I have typed in the chat window also. The Transcribe Glass is a product which is going to come soon in India, where people who are hard of hearing can wear this and participate, not completely, but in a much improved way. So this is, and this is an assistive technology. So we are also discussing how assistive technology makes classrooms inclusive. Is one of them is this aspect. There are also other solutions which are possible. For example, these days, people are also developing virtual sign language interpreters. So the virtual sign language interpreter is not the physical person.
but somebody who emulates sign language as an avatar sitting basically through a computer, this thing. So in that case, what happens is it can be used by all the people. You don't need a sign language interpreter. Whatever is the teacher which is spoken is actually converted through sign language virtually, and then probably you can access. This is another solution which will probably come soon to make things accessible. Some of these are being tried. Some of these are just introduced in India and other parts of the world, but I think they have not still reached the mass people. But I think it will happen soon. Okay. So that is one way to look at the problem which Rohit mentioned about sign language interpreter. Okay. Then a second problem which he mentioned was about VI. So anybody would like to write some solutions for VI? Put down in your chat window. Okay. Any new thoughts for visually impaired, solutions for visually impaired people to? Good morning. Okay, smart glasses with voice enabled. Yeah, I think that is I think what we just discussed, correct? Okay, so for people who are with visually challenged, for somebody to understand what is happening in the classroom, few things have to be done. Okay, first thing is, for example, let's say a teacher is using a PowerPoint. Many times teachers start teaching, they display the PowerPoint and start explaining the slide without reading the slide. And if I have a student in my class who has a visual impairment, what I'll do is I'll read the slide so that the contents are made visible. I can describe what is there on the, if there is a picture, I'll describe it first before I start explaining in detail or interacting with this particular thing. So that means teachers become a medium between the slide which is displayed and the student who is not able to see. We have seen the mistake, lot of students. In IIT Delhi, we have students who are completely blind. So one of the student came and said, he is a student of economics. And he said that the teacher came and put the slide and started explaining the equation, which was there on the slide. He wanted that faculty should read the equation once. I think even if you read once, most of the students will be able to know what is the equation you are discussing, and then you can actually do. This is a very small thing, but most of the teachers may not know that this has to be done when you have a student who is with a visual impairment in your class. There are some universities, what they do, which is more important, which I think at least some of the institutes in India and AITD
should be doing is, suppose tomorrow I have a class and I'll actually prepare the slides in accessible format and give it to students at least 24 hours in advance so that they can actually go through before attending the classes. So if I go through the slides, suppose the text on the slide can be converted to speech or braille, or I can also convert a slide into a braille version of that. And a student who knows braille can actually read or get the slide, what is being told by the teacher, and then go to the class, then it becomes more inclusive. If you start teaching something which is very new, where the student was not given the slides, then there is a gap. And I think this is another important, and both these solutions actually do not require much of technology. There may be some aspect where technology may be required, but teacher's role becomes very, very important. Then there should be somebody who has to convert teacher slides into accessible format and give it to the student. So that service should be there as a part of the institute, and it is done in some of the universities, particularly in abroad, where a blind students get all their slides which they are going to study tomorrow at least 24 hours in advance. So that's another possible solution which can be implemented. Just to extend this, whenever you use a PowerPoint slides, particularly when you have a student with visually impaired, the PowerPoint slide may have both text as well as graphics, pictures, diagrams, tables, etc. Now, converting a text into speech or a braille is relatively easy, but I think a major challenge comes if I want to give slides in advance to a student and my slides have a picture. How do I convert these pictures into accessible format? And that's a very important aspect. And most of the universities struggle. Very few universities are able to do, but I think it has to be done as early as possible. Now, in order to make pictures accessible for people who are visually blind, you can always create what is called as a tactile diagrams or tactile graphics. So tactile diagrams are basically the embossed versions of the pictures, which people can actually touch and then get a feel of the diagram. This means that what I cannot see, can I actually get it by touching it as a embossed figure on a paper or a plastic sheet. So let me go back and give you probably some examples of tactile diagram, and then I can come back. Yeah. So this is a tactile diagram. What is shown in this particular slide is basically embossing has been done on a paper like a braille is embossed on a paper. So just like a braille can be embossed, you can also emboss a diagram on in a sheet of paper, and there are printers which are available. So here, person can actually touch the embossed figure and actually can get the information. So this is generally done through what is called as a braille, the embosser, which can be bought. This is another, this is example of embossed diagram, which you see. This is a printer which can actually emboss for you. And on the right side, what you see as the
there are some braille, and there is also some lines which are embossed on a paper, which can be, which one can touch and actually feel the diagram, just like we see the diagram. This is another printer which is called swell printer, or it is done on a swell paper. So in this, first you have to print it on a special sheet using a black and white printer. And then that black and white print is sent to another printer, which is called as swell printer. So wherever you have the black color, the height of the paper raises locally in that region. That means it's again like embossing happens wherever you have a color, which is black. So first I'll do it in black and white normal printer, and then send it to swell printer to emboss it. This is another type of printer which is available. And these printers, this printer is not very expensive. It's like about 30,000 rupees or 40,000 rupees. But only thing is the paper is very expensive, because of which many people are not able to use. Sometimes one paper with a picture would cost you tens of or even 100 rupees in some cases. This is a third way to make pictures accessible, which is called thermoforming, where you take a plastic sheet and heat it and then press it against a master to get a plastic sheet which is embossed, which is called as a thermoformed tactile diagram. Like if you see what I'm showing in this particular picture, there are two portions. On right side, there is a master which is prepared for making the diagram. And then left side is the actual diagram where the plastic sheet is heated and pressed against the master. So the plastic sheet will have an impression of a master, and then it becomes a picture which can be touched. Now, once I have a master, I can prepare any number of tactile diagrams in a plastic sheet. Master has to be prepared once, but the number of copies which can be made can be any. It can be 1, it can be 100. Sometimes it can be thousands, using a master which is shown on the right side. So using this, you can prepare, for example, what is shown on this particular slide is embossed diagram, thermoformed tactile diagram of map of India, where I can actually look at the border. I can even look at the states if those are embossed. I can look at the rivers. I can make multiple maps. Students who are studying, for example, geography, can not only just hear about geography, but they can also touch most of the geographical indicators and learn better. So it's required in all the science, maths, economics, geography, all these subjects would be extremely benefited if you have these tactile diagrams, which are made available to students in advance, if possible, or at least after the class. So these are some of the books which are now available in the tactile form. All the NCERT textbooks from class 6th to class 12th, for example, science, maths, they have been now produced in the tactile version. So students can actually study science and math subjects. Visually blind students can study science and maths using these books. Earlier, they used to study up to 6th, 7th, 8th, and then they'll change their subject. But now books are available in CRT, and people can do 9th, 10th, 11th, 12th. Are clearing JEE and coming to IIT as a student. Visually blind students are now being admitted to IIT because they're able to learn and
compete with other students. Okay. So I think this is another solution. How do you make classroom accessible to somebody who is visually blind? There are a number of solutions which are available. Okay, any further questions which have come? Let me see. Okay, so one question which has come is what kind of techniques visually impaired students can use to ask their queries during the class? Queries means questions, etc. So if you can make the classroom inclusive, then the questions which they can ask can be, a lot of these questions would be oral. So they can always speak out their questions and ask. If they want to suppose, I want to ask a question where I am a visually challenged person, but I want to sketch something. I want to draw something. So for that, there is a special paper which is available, which is called as parchment paper. Parchment paper is something where I can use a pencil, and just like I draw it on a white paper, I can also draw it on this special paper, and it embosses, and people can both see and touch. So if you have such, these are not very expensive. For example, a sheet would cost only a couple of rupees. If those can be provided to students, so visually blind students can also sketch, draw in the class, and then clarify their doubts with the teacher. Imagine I'm doing a course, or I'm doing a class such as trigonometry. So in trigonometry, you have a lot of constructions, etc. So you can actually draw and then discuss with fellow students or with others, etc. One more interesting product which is now reaching students, let me share and show it to you, is particularly to clarify their doubts, etc. is, let me go back 1 minute, let me show you. Yeah, for example, these geometry kits are available. So there is a special, just like we use geometry box consisting of scale, protractors, and dividers, etc. So the same equivalent tools in Braille and tactile version are available for people to draw on sketch. And you can actually do it on a normal thick paper using these. So here, this picture which I am showing slide also shows some of the visually blind students doing their geometry exercises in schools. The same geometry kit can be used in universities also to draw, particularly if you have an exercise where you have to draw something, etc. So this tool is also now available in the market. It can be easily purchased, doesn't cost much, but can be used. So you see here students actually using this geometry kit in a closer view when they're actually studying this thing. This is another product which has just been released. It is called Shapescape. This is a small product which is used to study geometry. Usually, visually blind students have a problem in studying two-dimensional, three-dimensional shapes. And how does three-dimensional shape can be opened as a 2D shape, and 2D shapes can be folded to make 3D shapes. That gives a better understanding of geometry. So this Shapescape is something which can be used. Good thing is
this is not only meant for people who are visually blind. It can be used by anybody, sighted or low vision, even deaf blind. They can all use this particular product, and this gives better understanding of geometry when teacher is teaching three-dimensional forms of geometry, etc. So such tools are now easily available for people to use. Only thing is, teachers should be aware of what assistive technologies are available in the world, in India, and how much do they cost, how to acquire them for schools and colleges, or how students can acquire these assistive technologies is a very important aspect. Okay. Any further queries? Any further challenges which you face with students with disabilities in your class? Hello. Yes. Hello, sir. I'm Dr. Bindu. Sir, I have one question. Like just you have told, a teacher should know about all these assistive devices and the cost and everything, like data sheet of all these assistive devices. Yes. So my question is there any book or any data sheet you have or we have in our country from where a teacher can learn and by using that techniques, they can proceed with their class? Okay. So I think very important question. So currently there are some databases or some places where such assistive technology tools are available on the net, but they are all distributed. So one of the things which is being done now is to collect all that assistive technologies under one portal, which I think IIT Madras is doing. Sujata was there probably yesterday. So Sujata's lab is actually doing, and they want to release such a library of all the assistive technologies very soon. So in other words, it's there currently, but very distributed, but not at one place. So I think once this portal is ready, you will have many of them. It would also be good to know because some of these devices, assistive devices, are also given by the ministry. Ministry of Social Justice and Empowerment has list of devices which they actually give it to people either free of cost or sometimes at a very, very reasonable price. So their website also gives some of the assistive technologies which people, which they actually give it to people. So that is another source which you can see. And I don't know, Binduji, where are you based in? Sir, right now I'm in AITD only. Oh, IIT. Okay. So one of the things which we will also do, so what we have done in IIT Delhi is that we have put all the assistive technologies which are used by visually blind people in as a they're all available for seeing, trying, and using in a lab at our place. We call it as a experience zone. So we have close to 200 assistive technologies for blind in one place. So if anybody from AITD, Binduji, if you are visiting our AITD team or any of the participants, if you are visiting to Delhi and would like to probably visit this place, we welcome all of you. Okay, thank you so much.
Sir, Yeah. so you also give some kind of training for 2 or 3 days training on that assistive devices? We do. In fact, training is a very key part of this center. So this center is called National Center for Assistive Health Technologies, which was started 2 years back. So we do different type of trainings. We do training for users. We do training for special educators and teachers. We do training for example, the parents or the caregivers of the people. We also train institute administrators and policymakers. So there are different trainings, and these trainings are done both at our place, and we also go and do it in other cities. For example, we recently trained 6 special schools in Orissa in terms of assistive technologies which are available and which can be used. Similarly, we have gone to Bihar, we have gone to Jharkhand, we have gone to Chhattisgarh. I think almost all major states where we also do the training based on the needs of the people. And we also invite people at our place for training. Maybe if you are interested, I'll actually share the email in the chat box. And I think you can write to us, you or anybody who wants to. Okay, sure, sir. Thank you so much, sir. Okay, so there is one other question from Pankaj Kumar Yadavji, who is asking, what is the problem that visually impaired face in higher education, especially in R&D? For the sake of, I feel it is limited to non-tech field. Please make, you are right in some sense, because many of the science, maths, and other subjects had a lot of diagrams. So accessing a knowledge in terms of the research knowledge was also very, very limited, because of which opportunities for particularly people who are visually impaired in R&D has not been the same. But as the technology is growing, you can actually do many more things, like the things which we discussed to access. Text can be now very easily accessed through Braille or audio. Pictures are also now accessible. Once I'm able to access text and pictures, I can read any research paper which is available, because that is a very important for a research. Am I able to read existing research, which is an important. Slowly, technology is now making that possible, which is there. You may have also seen that even in the case of non-tech, earlier journals used to put their papers in PDF format, which was not accessible. Now most of the journals do it in a very accessible format. They also give you EPUB option for you to download a research paper so that it can be accessed clearly. So things are changing, but not at the pace which we expect. So in future, as the assistive technology tools increase, we will see that research will be more accessible, and there'll be good participation of visually blind people, even in science and science, technology, and engineering research. Right now, it is somewhat limited. But we do have, for example, our lab had a student who was completely blind, who worked on how to make equations accessible in a digital format.
So he did a research on that, and he recently got his PhD in computer science from IIT Delhi. So now we have a tool to where I can actually equate. How do you read a complex equation in terms of splitting into there is both research is going on and development of new assistive technologies happening. Things are improving, but we are not still a lot of other products and research is required before we can say we are completely accessible, or visually challenged people have the same experience as any of the sighted persons. Right now, there is a gap. This gap is not only there in education, but even in, for example, accessing, let's say, mobile apps. I think this class has there are many participants who are visually challenged here, who also use a lot of mobile apps for purchases, ordering food, or interacting on social media, and that is for communication, etc., or maybe booking a taxi. But the experience is not same as that of sighted people. So they get to do, but with a very, very difficulty. So I think user experience in these apps is still a gap, and people are actually still working on that. There is a lot of research which is also possible because many of your faculty members, there is a lot of scope for doing new research, how to make things more accessible using technology is a possibility. We also had about 6 to 7 students who did their PhDs on assistive technologies, development of new assistive technologies, and making studying the effectiveness of this, and much more is possible. Okay. Last question. Is it worth to make push visually impaired in R&D, as lots of people are doing R&D across the globe? See, I think one thing, one of the things which is common in all assistive technologies, etc., is that you don't want to say that certain things cannot be done by people with certain abilities. The moment you say that people who are differently able cannot do certain things or should not do certain things, this is against the whole philosophy of inclusion. So the moment you say inclusion, you are striving to see that anybody and everybody can do the same things, is the overall goal of any inclusiveness. The moment you say, if you don't want to push or include certain things in certain things, then you are not inclusive. Then we are not looking at such a non-inclusive word. So idea is to do that. And let me also show you the definition of assistive technology, which is very important. And that will also give you a little more idea. Just give me a minute. So assistive technology has been defined by World Health Organization. And they say assistive devices and technologies are those whose primary purpose is to maintain or improve an individual's functioning and independence
to facilitate participation and enhance overall being. If you really look at most of the time when we think of assistive technologies, we look at improving the individual's functioning. Okay, there are certain functions which certain abilities cannot do. So how do you make it happen? Is the role of assistive technology. And if you just stop it there, then probably you're not completely inclusive. Complete inclusion comes because of two other words. What are those? One is independence. The person should be able to do the same task with the same efficiency independently without anybody's assistance is a very key. And second thing is one should be able to participate. Participate in the sense, I do it in certain way and you do it in certain way, but we can't together communicate or do jointly is also not in favor to this thing. So participation is very important. For example, you saw that Shapescape, the geometry tools which are used to this thing, they can be used by both. They can be used by sighted as well. They can also be used by the visually challenged so that they can together communicate, do jointly, participate. So assistive technology is not just the functioning. It's more about independence and participation. So I think, in other words, the answer to your question is that we are not pushing, but everybody should be able to do the assistive. Everybody using assistive technologies, everybody should be able to do whatever they want. You cannot say this is denied because you don't have abilities. That's not inclusive. Any other questions which you have? Any other challenges? Or anybody wants to share their experience? So there's one question from the participants we would like to speak on. Okay, go ahead. Good morning, sir. Yeah. Sir, my name is Alpishak and I am currently a IT final year student at Dr. IIT. Actually, I have a visual impairment, sir. So, as I'm IT student, so most of the time I have to work on laptop. So, due to the visual impairment, all the loads and works are done by single eye, sir. So, most of the time, fatigueness and strengths are like that problems I faces many times. So is and when I search for this solution, like is there any assistive device? So I didn't find any such type of device. So is there any device or smart glass or anything else which can help me? But why do you strain? Do your eyes strain? Is it the what you're saying? No. Like fatigueness most of the time I face, sir. Okay, so are you a low vision or something because you have to use, and because of that it's a fatigue? Sir, actually I have a partial vision in my right. Partial vision. Okay, yeah. So yeah, I think very good question. Now what we have seen is when we look at the assistive technologies, there are more solutions available for people who have lost vision than the people who have a partial vision. And I think the assistive technologies there are still very different. For example, I may be using various types of magnifying glasses, or I may be using computer screens where I have an enhanced, view so that I can read, etc. But I would still say for partially vision,
the number of assistive technologies is still not many. One good thing is that there are very recently lot of new, these devices have been launched, which you can actually wear. These are wearables, and they not only make your life easier and also reduce the fatigue. But only problem which we faced is that these have still very expensive and not reached India. So That is the reason, sir. yeah. So we probably need more people to do both R&D and new product development in this space, which is missing. So I think it's a good point, and I think I'll also convey this to I don't know, ministry, which is there, because sometimes what is happening is the partial vision people require a different assistive technologies. When those are not available, they are asked to actually use the assistive technologies which are meant for visually blind, which is not correct. For example, the braille. Okay, that I think if they have a partial vision, there should be newer solutions which they need not use the braille as an option. And Yes, I sir. think I think that is also we have seen, which is there. So I don't know. Are you also based in AITD Kanpur? Yes, sir. Okay. Yeah. So there is another place which is very recently has set up a good lab for partial vision, is in All India Institute of Medical Sciences, Delhi. By any chance, if you are visiting Delhi, I would advise you to go to RP Center. RP Center is their ophthalmology division, and there are one or two faculty who work in partial vision, and they have set up a lot of gadgets and devices. Of course, right now they are all imported, but at least people can see what are available and what needs to be developed. Thank you, sir. Any more questions from the participants? Yeah. I just typed the doctor's name in All India Institute of Medical Sciences, Delhi, who runs this lab. This is Dr. Suraj Senjam. So Suraj has a good lab. Check it on the chat box. Yeah. And so Pankaj Yadavji is saying, can we get PDF of your presentation? It would be helpful. So I think I'll actually send it. I'll send it to the organizers, and then they can distribute it to you. I'll do it. And other thing which is also slowly now getting popular, particularly for people with visually blind, is accessing the braille. Usually used to happen through the first you print a braille and then access. But I think one set of devices which are now available is refreshable braille, where you have a braille pins which pop up and down, and you can do. Let me just show that and then close that. 1 minute. Yeah. 1 minute. Yeah. So this is, for example, is a laptop, which is a braille laptop. So in this, if you see, there is no display, visual display, but there is a braille display at the bottom. So there are 40 characters of braille can be displayed at a time, line by line. So first,
first line comes as a braille characters on this. Once you read all the braille characters, the next line pops up and you can actually do. So this also comes in two versions. Either you can use a QWERTY keyboard like the one which is shown in this picture. There is also another version which uses Perkins keyboard. The people who are using braille would know both QWERTY keyboard and the Perkins. Input can be given using both the keyboards. So this is like a complete laptop for people who are completely blind, because using which you can read, you can write, you can listen, you can browse various sites, you can chat, you can edit documents, and multiple things can be done in just that there is no visual display. All the display is a braille display. For example, there is a digital library somewhere in the world. I can connect this braille laptop to that, and I can read all the books which are available in digital online version library books in the form of braille using devices such as this. India also has Sugamya Pustakalay, which is one of the accessible this thing. People are right now able to read. You can connect and you can actually read the books through audio, but you can now also do it using the braille. Okay, somebody is asking, please share my email ID. So I'm writing it here. So it is pvmrao@design.iitd.ac.in. So I've just typed my email ID. Okay, any other point before we close? Yeah, so if there are no questions, then probably I'll close it here. And also, if you're visiting Delhi, you can visit the lab and look at all the assistive technologies in action when you are in IIT Delhi. Visit IIT Delhi and visit this lab. So this lab is in a place called Research and Innovation Park, IIT Delhi. So I'll just write down the address also. It's called NCAT, NCAHT. It's actually short form for National Center for Assistive Health Technology, Research and Innovation Park, IIT Delhi. Okay, all the best. And thank you, sir, for such a grateful insight that you shared. We're really privileged to have you as a speaker. Thank you, sir.
ये भी तो दिखेगा सारे खाने। Good morning, sir. Would like to welcome you to this faculty development program. Sudhir Kamle, sir, was a faculty member at the Indian Institute of Technology, Kanpur. He was a professor in the Department of Aerospace Engineering. His research interests include aeroelasticity, computational fluid dynamics, and experimental aerodynamics. Professor Kamle has contributed significantly to the field through his research, publications, and teaching, guiding numerous students at both undergraduate and postgraduate levels. So we would like you on this FDP program, can share your insight with the participants. We're looking forward to hear you. Thank you, sir. I had sent you a WhatsApp and I had sent you a PDF file. So I had requested Dr. Sharma to show the slides from your end. Okay. So can you do that, please? Yes. Okay. Yes, sir. And then I will say next slide, so we can go on next slide. Right now, I don't see the slide, so maybe you can display that. Just as sir, we are doing it. Okay. Next slide, can we, sir, move on to the next slide now? Yeah. Now, just 1 minute. Okay. So first of all, thank you for inviting me to this FDP on assistive technologies for supporting inclusive education. And I was in the Aero Department, IIT Kanpur earlier, and currently I'm in the Department of Astrophysics and Space Engineering, IIT Indore. And I also been involved with the blind school over here in Indore, and I was in Pune, so I also talked to some of the blind school people over there. So even after retirement, I'm still very active, and I really like to help out with the physically challenged. Okay, so thank you very much, and now we can begin. Okay, so this is the first slide. Can we go to the next slide, please? Okay, so my table of contents we'll have introduction, then disability inclusion strategies and artificial intelligence, then what should be the objective, my experience in IIT Kanpur, and what kind of accommodation can be done, automation can be done, and of course the AI support in improving inclusivity. This is what will come during the lecture, so not in the same order, but really over there. Okay. So what I talked to Dr. Sharma, and I think I'll be speaking in Hindi and partly in English, because some people may have issues with English. Okay. So is that okay if I do the mixed mode? Is it okay? Yes. Hello? Yes. Yeah, yes. okay. Okay, fine. तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके. अब ओके, तो एक्चुअली क्या है ना कि आजकल में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रही है, और ये जो लड़के आते हैं जैसे AITH में आ रहे हैं, IIT में जा रहे हैं, IIT इंदौर हो, कानपुर हो, जहाँ भी, तो उनको अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ हो नहीं पाती उन लोगों की. तो उसके कई सारे कारण हैं. तो ये हम लोग देखेंगे, और ये देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे गैप को कम किया जा सकता है. ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, तो ये जो डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रैटेजी है, ये एक्चुअली मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है यूनाइटेड नेशंस की. तो ये जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट है, और वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमको डिफरेंटली एबल लोगों को इंक्लूड करना है सोसाइटी में, तो उसको किस तरह से किया जा सकता है. तो सबसे पहले वो लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब ये है कि हम लोग देखें इस तरह की लीडरशिप को इवॉल्व करें कि जो इन लोगों से संबंध है, जिनका जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, जिससे वो जो पॉलिसी हैं या स्ट्रेटेजी हैं जो बनाई जाएंगी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और इसी दिशा में मेरे ख्याल में FDP बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे टीचर्स भी हैं, कुछ विद्यार्थी भी हैं.
तो इससे पता लगेगा कि प्लानिंग डेवलप हो सकती है, टीचर्स प्लानिंग डेवलप कर सकते हैं कि ठीक है हम ये ऐसे जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद कैसे करेंगे। तो स्ट्रेटेजी में एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इस तरह की लीडरशिप को डेवलप करना। दूसरा ये है कि इंक्लूसिवनेस। हम ये ऐसा है कि जो ऐसे पर्सन्स हैं विद डिसेबल्ड हैं उनके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हों। तो AITH में तो जा चुका हूँ, आई थिंक डॉक्टर अर्चना मैम थी उस टाइम पे, तो हमने भी देखा भी था वहाँ पर। और ये देखना चाहते हैं हम लोग कि जो इक्वल एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, फुल एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल रहता है कि नहीं। और एक्सेसिबिलिटी का मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एक तो यह है कि बिल्डिंग्स एक्सेसिबल है कि नहीं, फैसिलिटीज एक्सेसिबल है कि नहीं, वर्क स्पेस एक्सेसिबल है कि नहीं, इंफॉर्मेशन है कि नहीं, कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। और इसका मैं अभी एक उदाहरण देता हूँ, और हम लोग को देखना है कि कौन से मेजर्स, इक्विपमेंट, सर्विस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमको एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो एक मान लो कोई ब्लाइंड बच्चा है, तो लैब में तो किसी के सहारे पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन वो मान लो मॉनिटर नहीं देख पाएगा, तो उसके लिए ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह मान लो कोई डेफ बच्चा है, तो मान लो पहुंच तो जाएगा बिल्डिंग में, अपनी जगह पे भी पहुंच जाएगा, मॉनिटर भी देख लेगा, लेकिन उसको प्रॉपरली सुनाई नहीं देगा। तो हम लोगों को ये देखना है कि फुल एक्सेसिबिलिटी का मतलब जो भी टाइप की डिसेबिलिटी हो, ये बिल्डिंग, फैसिलिटी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, सब उसको एक्सेसिबल रहना चाहिए। मतलब मान लो जो डेफ बच्चा है वो प्रॉपरली सुन नहीं पाया, इसका मतलब उसको कम्युनिकेशन नहीं हो रहा प्रॉपर। तो हम लोगों को जो स्पेसिफिक मेजर लेना है, और ऐसे इक्विपमेंट चाहिए, ऐसी सर्विस चाहिए कि इंक्लूसिवनेस रहे, चाहे कोई भी टाइप की डिसेबिलिटी हो उसको इंक्लूड कर पाए हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। एक तीसरा उन लोगों ने जो कहा है यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट में, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कि हम लोग क्या इंटरनल सिस्टम इस तरह के बनाए कि जैसे लोग हैं विद डिसेबिलिटीज वो यहाँ पर हमारे आना पसंद करें। और मैं ये उदाहरण देता हूँ, IIT कानपुर का भी है और IIT इंदौर का भी है। जैसे मैंने देखा है कि IIT कानपुर में तो काफी काम किया है डिफरेंटली एबल के ऊपर, अब ये नई संस्था है या धीरे धीरे काम हो रहा है। तो कई ऐसी जगह है जहाँ व्हील चेयर वाले को पहुंचना नियरली इम्पॉसिबल है। तो हम लोगों को इस तरह की है, जैसे कोई व्हील चेयर मान लो आया है दूसरे IIT में, नए IIT में इंक्लूडिंग इंदौर, मैंने और भी IIT देखे हैं नए वाले, तो उसमें उन लोगों ने कोई फैसिलिटी नहीं बनाई। तो कोई वहां पर जाता है व्हील चेयर वाला, बोलता है अरे मेरा तो काम यहाँ बनेगा नहीं, मैं तो यहाँ क्लास कैसे जाऊंगा, मैं लैब कैसे जाऊंगा, मुझे बहुत मुश्किल पड़ेगी। तो हम लोगों को कल्चर ही इस तरह से बनाना है कि लोग अगर इस तरह के आए डिफरेंटली एबल, तो बोलेंगे नहीं ठीक है, यहाँ मेरा काम बन सकता है, यहाँ मैं कुछ सीख सकता हूँ। तो इस तरह का कल्चर और ऐसी सिस्टम भी बनानी है हम लोगों को। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके। तो एक हमारा जो बड़ा अच्छा इंग्लिश की फ्रेज मुझे बार बार लगती है कि हम लोगों को ये है कि हम लोगों को ये बोले कि भाई तुम खुद अपने साथ काम कैसे कर सकते हो। जैसे इसमें है कि गिव अ मैन अ फिश, ओके, एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। मतलब ये है कि आप उसको सिखाइए कि मछली कैसे पकड़ते हैं, तो जिंदगी भर उसके लिए फायदा हो जाएगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो डिफरेंटली एबल लोग हैं वो खुद से अपना इंडिपेंडेंस डेवलप करें और खुद से सीख पाए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम उन लोगों को किस तरह से और ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से और ज्यादा मतलब कर सकते हैं कि अपने आप से वो सीख पाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। एक काफी क्रिश्चियन पहले फिलोसोफर था मेमोनाइडिस, इसका मुझे बड़ा अच्छा लगता है बड़ा उदाहरण, कि आप जो हैं आप बोलेंगे कि भाई हम ऐसे जो लोग हैं डिफरेंटली एबल उनकी मदद क्यों करें। तो उसका कारण ये है कि एक तो ये है कि अगर आपने किसी को मदद करना है, कोई जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट चैरिटी है, तो उसको या तो आप कुछ पैसे दे दीजिए, या आपको एक ट्रेड सिखाइए, या किसी बिजनेस में लगाइए जिससे वो एक ऑनेस्ट लाइवलीहुड कमा पाए। और ये जो बाकी है जो मांगने वाला, ये अपना हाथ किसी के सामने न फैलाए। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो बच्चों को हम इस तरह की ट्रेनिंग दें, विद्यार्थियों को ऐसी ट्रेनिंग दें कि उनको किसी के लिए भी हाथ फैलाना ना पड़े। चाहे वो हाथ फैलाना इस तरह हो कि भैया ठीक है मुझे रोड क्रॉस करना है, या इस तरह का हो कि भैया ठीक है मेरा कंप्यूटर ऑन कर दो। हम ये चाहते हैं कि वो सब काम अपने हाथों से, अपने पैरों से चल के सब काम खुद कर पाए। ये सबसे बड़ा जो चीज है हम ये लोग कर सकते हैं।
तो हमारा दिल में यही उद्देश्य रहना चाहिए, हमें यही करना चाहिए कि हम लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एक मेरा आजकल मैं बोल रहा हूं कि अभी लास्ट 6 मंथ में जो आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये काफी दुनिया में फैल रहा है, और इस बात के ऊपर मैं ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग कई सारे डिफरेंटली एबल को कैसे हेल्प करें कई सालों से देख रहे हैं, लेकिन एआई की मदद से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि एआई जो है वो बहुत ग्रेट लेवलर है। मतलब लेवलर मतलब कोई अमीर हो गरीब हो, हिंदुस्तान में हो पाकिस्तान में हो अमेरिका में हो रशिया में हो, कोई फर्क नहीं है। ये इंफॉर्मेशन जो है उनको सबको मिल सकती है। इन लोग ने बनाया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर, ये सब चीजें, इससे काफी लोगों को इकट्ठी मदद मिल सकती है। और एक बैरियर जो होता है एजुकेशन में, लड़कों को इंफॉर्मेशन, लड़कों को पता नहीं रहता कि भाई हमें हमारे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो हमें उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन का उत्तर क्या मिलेगा। ये लोग इंटरनेट पे कई बार देखने की कोशिश करते हैं, प्रॉपरली सवाल नहीं पूछ पाते, उनको मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इस तरह की अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वगैरह रहे तो डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए काफी दिक्कत होती है उनको नेविगेट करने में। तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आजकल क्या है ना कि कई सारे कंपनी जो हैं वो एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज कर सकते हैं कि जिससे उनके क्लाइंट्स को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और हम लोगों को जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए ये भी है कि वो लोग खुद भी एआई को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी समस्या सॉल्व करने के लिए। मतलब हम लोगों का सिर्फ ये पर्पज नहीं है कि हम लोगों को कोर्स पढ़ाने, ये भी पढ़ाने, टीचिंग अ मैन हाउ टू कैच अ फिश। वो लोग कैसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि उनकी जो नीड्स है उसको वो सॉल्व कर पाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ एयर इंडिया का। अब मैं पहले एक कहानी सुना देता हूँ, मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगती है। एयर इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है एयर इंडिया एक्सप्रेस सर्विस। ओके, ये है उनका कॉन्वर्सेशनल असिस्टेंट। तो अब मैं क्या हुआ, हम लोग आ रहे थे अभी अमरनाथ की यात्रा करके, 10 दिन पहले की बात है, और हमारी फ्लाइट जो है एक दिन पहले हमें सूचना दे दी उन्होंने कि भाई आपकी फ्लाइट तो कैंसिल हो गई। अब हम लोग बड़े परेशान कि वहां से हम दिल्ली कैसे हैं। तो फिर हम लोगों ने पूछा भाई ट्रैवल एजेंट से, बोले बस आप एयर इंडिया को फोन करो। तो एयर इंडिया को फोन किया, फोन पे तो पता ही है सर्विस ऐसे ही रहती है। तो उन्होंने, रोबोट ने आंसर दिया कि भाई आपका एआई असिस्टेंट के पास चला जाइए, जो इनका एआई एक सपोर्ट है। तो उसके पास गए तो हमने पूछा भाई मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैंने प्लेन इंग्लिश में लिखा कि माई फ्लाइट इज कैंसिल्ड, ओके व्हाट डू आई डू अबाउट इट। तो उसने 3-4 सवाल पूछते पूछते गया, उससे पीएनआर पूछा, ये पूछा, सब पूछते पूछते गया, और आखिर ने उसने पूछा कि आपको कौन सी फ्लाइट चाहिए। तो मैंने बता दिया भाई इसमें से ही कर लो रीशेड्यूल। तो उसने रीशेड्यूल करके टिकट भी भेज दिया। अब आप देखिए ये सब चीजें जो हैं, ये एआई असिस्टेंट ऑलरेडी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये जो एआई है सिर्फ 5-6 महीने पहले आया है, और ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, और उसके बहुत मदद मिल रही है। और यही काम अगर मैं किसी एजेंट के थ्रू करता तो मुझे आधे घंटे तो उसको फोन पे समझाना पड़ता कि मुझे चाहिए क्या। और यही इन मॉडल को हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ऑलरेडी देख रहे हैं। अब एक और एग्जांपल है, मैंने जो यहाँ पर लिखा है, एआईएक्स को पूछा कि भाई हाउ कैन आई गेट अ व्हील चेयर सपोर्ट फॉर माई मदर फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट एट दिल्ली एयरपोर्ट। बस ये मैंने इंग्लिश में उससे सवाल पूछा, तो एआई ने सीधा उत्तर दे दिया कि भैया बुकिंग अ व्हील चेयर इज वेरी इजीली, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसने लिख दिया स्टेप्स टू बुक अ व्हील चेयर, क्लिक ऑन दिस लिंक। उसने नीचे लिंक भी दे दी थी हमको। ओके, मैनेज सेक्शन में जाइए, फिर आपका पीएनआर बुकिंग डिटेल भेजिए, फिर एड ऑन में जाइए, ठीक है ना, बुक व्हील चेयर। If you missed pre-booking a wheelchair, don't worry. All you need to do is approach our staff at airport sales counter check-in to get wheelchair assistance at the airport. तो उसने पूरी की पूरी स्टेप समझा दी। अब कोई आदमी बिल्कुल बुद्धू है, पहली बार हवाई जहाज का ट्रैवल कर रहा है, उससे कोई करने में दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एआई सपोर्ट के थ्रू आदमी ये कर सकता है। और इस तरह का व्हीलचेयर सपोर्ट वगैरह काफी लोगों को होता है। सिर्फ मतलब डिफरेंटली एबल हो सकता है कि बचपन से हो सकता है ओल्ड एज में हो गए, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं हम लोग टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पूछने के लिए। ध्यान दिया होगा कि मैंने किस तरह का सवाल पूछा। मैंने तो सिंपल सवाल पूछा था
कि भाई हाउ कैन आई गेट व्हील चेयर सपोर्ट फॉर माई मदर एट दिल्ली एयरपोर्ट। मेरा तो सिंपल सवाल था, और उसने पूरा का पूरा उसने मेरे प्रश्न का मतलब समझा और पूरा का पूरा उसने उत्तर दे दिया। और इसी सपोर्ट को फॉलो करके पूरा का पूरी आपकी बुकिंग हो जाएगी। तो जो आदमी है, मान लो चैलेंज है, उसको बहुत सारे इस तरह के सपोर्ट मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह का सपोर्ट जो है व्हाट्सएप पे भी है। मेरे को तो पहले ही आ गई थी एक्चुअली, जब व्हाट्सएप में, अभी आप देखते हैं व्हाट्सएप जब खोलेंगे तो राइट में एक नीला जैसा वो आता है गोला, तो वो उनका एआई वाला सपोर्ट है। तो इंडिया में जो लॉन्च हुआ, मेरे को उन्होंने प्री लॉन्च वर्जन करीब 2-3 हफ्ते पहले भेज दिया था ट्रायल के लिए, तो मैंने उसको भी देखा था व्हाट्सएप वाले सपोर्ट को। तो इस वाले सपोर्ट से क्या है ना कि हम कई सारे सपोर्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं सवाल, और ये उसके में हमको वहीं पर उसके आंसर वहीं के वहीं मिल जाएंगे। और कई सारे सवाल मैंने, जैसे एक सवाल उससे पूछा कि ओके, जनरल सवाल पूछा कि अ कॉइन इज डेटेड 200 BC, प्रूव दैट द कॉइन इज अ फेक। तो उसने उसका पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग दे दिया कि यह कॉइन क्यों फेक होना चाहिए। तो ये इस तरह के भी आपके जो सवाल हैं उसके भी आपको आंसर वहां पर मिल जाएंगे। अब हमारा सवाल ये है कि कॉलेज में हम लोग एक तो जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट ही नहीं होती है। कुछ बच्चे सोचने के लिए सोचता है कि भाई मेरे को हेल्प चाहिए, उसको पता नहीं कि कहाँ पर जाके पूछेंगे, किससे जाके पूछेंगे। अगर ये सपोर्ट सिस्टम है और इस टाइप का एआई वाला सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया तो बच्चों के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के लिए भी है। और व्हाट्सएप में भी आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में जो सवाल हैं वो तुम्हारे कॉलेज स्पेसिफिक क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते। उसका रीजन ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन्होंने 2 या 3 साल पहले बनाया था, वो आंसर नहीं देगा। लेकिन अगर कॉलेज में आपने इस तरह की सर्विस डेवलप की तो आप लड़कों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लड़कों को फिर इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, न किसी टीचर से न किसी से पूछने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल उनको एक्यूरेट आंसर वहां पर मिलेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ जो नई जैसे टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे होम ऑटोमेशन है। ओके, होम ऑटोमेशन में ऐसा है कि जैसे यूएस में है कि वॉइस असिस्टेंट है, वो आपके घर के लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट सिस्टम कर सकते हैं। आईओटी के वगैरह वजह से आप बोल के ही ये सब काम करा सकते हैं। जो जो स्पेशली ऑर्थोपीडिक चैलेंज बच्चे हैं उनको अगर, या जो बड़े भी लोग हुए उनको भी इस तरह के ऑटोमेशन सिस्टम से डायरेक्टली हेल्प मिल जाएगी। इंडिया में इस तरह के सिस्टम कम आई है, लेकिन जैसे यूएस में हमने देखा है कि कई सारे रोबोट्स हैं, वो आप उसको बोल दीजिए घर में तो जाके पूरे कारपेट को जाके कोने कोने में जाके क्लीन करना था। तो ये सब ऑटोमेशन हैं, कई सारे वॉइस कंट्रोल भी है। तो अगर कोई ऐसा है बंदा जिसके पास उसको दिक्कत हो रही है चलने में, तो ये भी चीजें कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का भी एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने एआई और एयर इंडिया में जो एक्सप्रेस में जो अवेलेबल है सपोर्ट, वो है वर्चुअल असिस्टेंट्स। आपको ये शेड्यूलिंग वगैरह का सब काम कर सकते हैं इस तरह का। और दूसरे कई सारे जो एप्स निकल रहे हैं वो व्हील चेयर नेविगेशन में, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन, ऑटोनोमस ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हेल्प कर सकते हैं। जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, उसमें तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में भी ये धीरे धीरे चीज़ें आ रही है। जैसे मैंने कई सारे दिल्ली मेट्रो में अभी गए थे, तो हम लोग ने मैप्स वगैरह देखे थे कि कहाँ से व्हील चेयर वाले लोग जा सकते हैं। तो इस तरह से नेविगेशन वाली फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन ये कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, ये इनफैक्ट दिल्ली एयरपोर्ट पे जाके ही आप एआई के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कौन सी अवेलेबल है। तो आप वहाँ जाएंगे और उससे पहले ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आपको इंटरनेट चलाना नहीं आता तब भी आप व्हाट्सएप के थ्रू और असिस्टेंट के थ्रू कई सारी चीजें पता लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एक दूसरा होता है कि कई सारे एआई पावर्ड चैटबॉट है और वर्चुअल कंपेनियन, इसके सोशल इंटरेक्शन भी। जैसे आपको कोई गाना सुनना हो तो आपने उसको बोला भाई ये गाना सुना दो, तो चैटबॉट जो है गाना भी सुना सकते हैं। आईटी इंदौर ने किन्हीं एआई सर्विसेज को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो लॉट ऑफ सच सर्विसेज आर अवेलेबल। उसमें ये भी है कि आपको ऑटोमेटिक पीपीटी बना के दे देगा। एक डॉक्यूमेंट अगर आपने वेबसाइट की लिंक दे दी तो वो
उसका आपको शॉर्ट वर्जन बना के दे देगा। इस तरह के ऑलरेडी चीजें दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल हैं। तो अगर ये जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज बच्चे, उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको जाने में तकलीफ है, तो दे कैन गेट राइट इनसाइड देयर रूम। दूसरा ये है कि जो कम्युनिकेशन असिस्टेंस है स्पीच रिकग्निशन के लिए और लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जैसे मान लो कोई आपको एक एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में अवेलेबल है, मान लो इंग्लिश में कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ओके, तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए भी इस टाइप का कम्युनिकेशन असिस्टेंस है। अपने इंडियन लैंग्वेजेस के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, लेकिन बाकी यूरोपियन के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फ्यूचर में ये भी आ जाएगा धीरे धीरे, कि मान लो एक डॉक्यूमेंट इंग्लिश एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दे कैन इनेबल रिमोट वर्क एंड जॉब मैचिंग सर्विसेज। अगर आपको कंपनीज में करना है, कुछ करना है, तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। इसके लिए जो है कॉलेजेस भी यूजफुल रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आपने इस टाइप के सर्विसेज या यहाँ पर आपने अपने सपोर्ट सिस्टम में प्रोवाइड की, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इन लोगों को ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो लैंग्वेज मॉडल के थ्रू सवाल पूछ के भी उसके आंसर मिल सकते हैं हम लोगों को। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोगों का ये जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या है? इनकॉपरेटिंग इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी हमें करना है इनकॉपरेट। इसका मतलब कि ये जो भी लड़के आ रहे हैं डिफरेंटली एबल, ये सोसाइटी में अडेप्ट कर सके और अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ दे। कई सारी जो चीजें हैं, जैसे मान लो म्यूजिक क्लब है या आर्ट्स क्लब है, या कई चीजें हैं जिसमें कई सारे डिफरेंट लेवल बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इन लोगों को हम लोग इस तरह की मेथड करें कि जिससे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ मिले। तो हम लोगों को जैसे बताना है, इंफॉर्मेशन देना है। इंफॉर्मेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन। जैसे आपने बताया कॉलेज में कि भाई यहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है, यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लड़के जा सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऑलरेडी अगर इंफॉर्मेशन लड़के आराम से एक्सेस कर पाए, देन दे विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। और इस तरह के मेथड करें कि जिनका पार्टिसिपेशन होगा पब्लिक अफेयर में, सोशल अफेयर में, तो अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। अगेन इंफॉर्मेशन कैन प्ले ए मेजर रोल। अच्छा, ये एक जो है इम्प्लीमेंटेशन आईआईटी कानपुर में किया था, इम्प्लीमेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। मतलब इस तरह का इंक्लूसिव एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं अपने कुछ कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आईआईटी कानपुर में, और ये भी बताऊंगा कि उसके बाद भी और भी चीजें जो मैंने बाहर देखी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो आईटीज में तो विश्वास है कि हमेशा कुछ ना कुछ तो भी इनोवेटिव किया जाए, और आईआईटी कानपुर की तो रैंकिंग देखी होगी इसे एनआईआरएफ में, इनोवेशन में तो नंबर 1 ही है। तो हम लोग यही सोचते हैं हमेशा नई नई चीज की जाए, और फंडामेंटल प्रिंसिपल से करें या टेक्निक्स ऐसे करें दूसरी फील्ड से, उनको यूज करके नई नई चीजें निकाली जाए। तो कई साल पहले की बात है, 2016-17 की बात है। एआईटीएच के कई सारे विद्यार्थियों ने भी हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट इवेंट में भी। ओके, तो ये हम लोगों ने किया था सीडैप। उसका पहले ही नाम था पीडब्ल्यूडी सेल, ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाला सेल। लेकिन इसका नाम अब हमने बना दिया है सेल फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो ये 2017 में बना था, और ये भी इसी टाइप की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो स्मार्ट मटेरियल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, वेयर आई वाज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। और उसमें हम लोगों ने एक सेशन रखा था कि असिस्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो हमने ब्लाइंड लोग और बाकी लोगों के ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस किया था। अभी इस बार मैं देख रहा हूँ आजकल कॉलेजेस में और एआईटीएच में तो हाई पर्टिकुलरली यूजुअली ऑर्थोपेडिकली चैलेंज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए मेरा भी टॉक मैंने सोचा कि ऑर्थोपेडिक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँ। लेकिन हमने जो किया था, कई सारे डिवाइसेस हैं जैसे ब्लाइंड लोगों के लिए बने हुए हैं या और लोगों के लिए बने हैं। ओके, तो उसके ऊपर मैं इतना फोकस मैं अभी नहीं करूंगा। लेकिन इस तरह की चीजें, एक और है कि अगर आपको कुछ भी इस तरह की चीज चाहिए, जैसे आपने बोला कि भाई आई एम अ पर्सन, जैसे इवन व्हाट्सएप के ऊपर आपका जो ब्लू बटन बना हुआ है उसके ऊपर आपने टाइप किया कि आई हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग कैरेक्टर्स, ओके, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर और व्हाट इज अ डिवाइस अवेलेबल फॉर रीडिंग, तो आपको कई सारे लिस्ट करके आंसर दे देगा।
तो आपको मेरा उद्देश्य ये है, ये नहीं है मेरा उद्देश्य कि मैं आपको 100 टेक्नोलॉजी का बताऊं, उसमें कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। पर्पस ये सॉल्व होगा कि बताएं कि आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वन। तो हम लोगों का एक ये पर्पस था इंक्लूसिविटी में कि बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेलेबल लेबोरेटरी रिसोर्सेज। ओके, तो उसमें जो अवेलेबल लेबोरेटरी रिसोर्सेज किसमें चाहिए हमको, फिजिक्स में चाहिए थे, केमिस्ट्री में चाहिए इंजीनियरिंग लैब में चाहिए थी। एक था एजुकेशनल रिसोर्सेज और एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस। मैं तीनों सबके ऊपर एक एक चीज बता रहा हूँ। बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का ये मतलब है कि कराते हुए आराम से पहुंच जाए, तो दिस इज लाइक अ बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक्सेसिबल लेबोरेटरी सोर्सेस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह लैब में है, इंजीनियरिंग लैब्स हैं। मान लो हम लोगों को एक केमिस्ट्री के लैब करना है जिसमें हम लोगों को टाइट्रेशन करना है। तो टाइट्रेशन में हम देखते हैं कि टाइट्रेशन में लोग कलर देखते हैं कि भाई हमने एक मिक्सचर ए में मिक्सचर बी मिलाया तो मिक्सचर सी बनेगा, और ये कलर का होता है। तो मान लो ये कलर, ये हमको करके देखना है। तो उन लोगों को अगर ये तो पता है कि ये मिक्सचर ए है, ये मिक्सचर बी है, लेकिन वो कलर कैसे देखेंगे कि ये कलर मिक्सचर सी बनता है कि नहीं? तो उसके लिए क्या है, क्योंकि वो लोग तो देख नहीं सकते, तो एक्चुअली कलर रीडिंग डिवाइसेस हैं जो कि कलर देख के बता देंगी कि ये चीज इस कलर की है। तो अगर आपने इस तरह की डिवाइस रीड की जो कलर पढ़ लेगी, तो ब्लाइंड बच्चा भी समझ कर टाइट्रेशन कर सकता है। इसी तरह कि अगर आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जैसे फिजिक्स लैब होती है उसमें हम फोकल लेंथ निकालते हैं, तो फोकल लेंथ के लिए हमको डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है। तो वो बच्चे तो देख नहीं सकते ब्लाइंड वाले, तो वो कैसे करेगा? तो क्या है ना कि ऑलरेडी स्केल्स आती हैं विच कैन रीड ऑल्सो। आपने स्केल पे पढ़ दिया और आपने उसका बटन दबाया रीड का, तो पढ़ लेगा कि भाई इतने सेंटीमीटर दूर है, तो आपका आंसर मिल गया उसमें। तो आपको एक्चुअली पढ़ना मतलब देखना जरूरी नहीं है, आपको दूसरी चीज चाहिए। तो ये सब काम कर सकते हैं। तो हम लोगों का ये फोकस था कि एक्सेसिबल इन लेबोरेटरी रिसोर्सेज में जो फिजिक्स के हैं एक्सपेरिमेंट, या केमिस्ट्री के हैं, या जो इंजीनियरिंग लैब के हैं, उसको हम कैसे एक्सेसिबल बनाएंगे। एक एक्सेसिबल और मैं बता रहा हूँ कि जो व्हील चेयर वालों के लिए करते हैं। जैसे व्हील चेयर वाले जो है उनको फाइलिंग वगैरह करना है जैसे लैब में बैठ के, तो उन लोगों को ये दिक्कत हो रही थी। तो हमने इस टाइप के स्टूल्स के लिए बोला था कि जो रेज हम कर सके स्टूल्स को, तो थोड़ा उठ के भी लोग ये फाइलिंग या इस तरह का काम कर सकते हैं। और AITH वगैरह की जगह जहाँ पर भी लैब फैसिलिटी है, अगर इस टाइप के स्टूल्स या फैसिलिटीज रहेंगे तो लोग उसको आराम से कर सकते हैं। तो ये एक चीज हुआ रिसोर्सेज। तो पहली बात हुई कि बैरियर फ्री, दूसरा एक ही रिसोर्सेज, तीसरा है एजुकेशनल रिसोर्सेज। जैसे मान लो कोई लड़का है, वो पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, मान लो प्रॉपर उसको सुनाई नहीं दे रहा है, या उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो हम लोगों ने उसके लिए स्पेशल ट्यूटोरियल डिजाइन किए थे या एक्सेसिबल मैनुअल डिजाइन किए थे। मान लो आपने कोई मैनुअल बनाया और उसको रीड वाले फॉर्मेट में बनाया, तो जो ब्लाइंड बच्चा है वो भी सुन के पता लगा सकता है कि क्या चीज़ है। इसी तरह फैसिलिटीज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, वो तो कई सारे जो फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको मिलता है, तो ये भी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया था। तो ये एस्पेक्ट हो गए एजुकेशनल रिसोर्सेज। तीसरा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। ओके, एकोमोडेशन फॉर्म और डिजिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली जैसे आइडेंटिफाई करना है कि किस बच्चे की क्या नीड है, तो ऑलरेडी हम लोग बच्चों से एकोमोडेशन फॉर्म भराते हैं कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, मेडिकली प्रॉब्लम क्या हो सकती है। वो हमने अगर डिजिटाइजेशन फॉर्म में किया तो हम लोग कोर्सेज को अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज भी उस फॉर्म में कर सकते हैं कि उसके लिए एक्सेसिबल रहे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एक ये था कि द पर्सन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, तो उनको दिक्कत होती है एक्सेसिबिलिटी हॉस्टल में, या स्पोर्ट्स में दिक्कत होती है, या उनको कभी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है। इन सब चीजों के लिए, और बीच में जो कोरोना भी पीरियड आ गया था,
तो इस तरह से पीरियड में ये एस्पेक्ट जो है हम लोगों ने देखे थे कि सीडैप के थ्रू हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो आदमी आईआईटी के अंदर है या जो बाहर भी है कोरोना में इधर उधर, तो आप अब तो आजकल सब लोग आ गए हैं बाहर, अब मतलब अब तो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये सब भी स्पेशल नीड्स डिफरेंटली एबल्ड है, वो लोग ज्यादा इस टाइम पे परेशान थे। और बेसिकली ये बोला था कि उनके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी की बात की थी मैंने। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल में क्या किया था। एक हॉल 30 नया बना था और नए भी हॉस्टल बन रहे हैं। तो एक है, हम लोगों ने देखा था कि स्लोप जो है वो बहुत जेंटल रहना चाहिए जो बच्चे जाते हैं, और एक्चुअली बाकी वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशंस हैं कि स्लोप जो है किस एंगल पर रहना चाहिए। जैसे 1:40 बना रहा है, 1:50 है, बहुत लो वाले जेंटल वाले स्लोप रहना चाहिए जिससे वो व्हील चेयर वाला जो है आदमी वो आराम से चढ़ सके। और दूसरा ये था कि साइड वाली रेलिंग भी वहां पर रहना चाहिए कि जिससे वो पकड़ के उधर उधर चल सके। अब ये जब चीजें हम लोग बिल्डिंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, जो लोग हैं, वो IWD टाइप के लोग, वर्क्स वाले, चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो लोग इस बारे में इतना सेंसिटाइज नहीं रहते। तो आईटी पूरे सॉरी इंडिया में ऑलरेडी कुछ कुछ एक्सपर्ट्स उन्होंने डेजिग्नेट किए हैं, डिसेबिलिटी एक्सपर्ट्स, जो ये बना रहे हैं कि बिल्डिंग्स किस टाइप की बननी चाहिए कि जिससे एक्सेसिबिलिटी रहे। जो लोग यहाँ पर दिल्ली गए होंगे उन्होंने दिल्ली मेट्रो में देखा होगा कि वहां पर वो दिल्ली मेट्रो बहुत अच्छी एक्सेसिबल है, व्हील चेयर वाला आदमी कहीं से भी कहीं भी जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि जब उन्होंने ऑलरेडी डिजाइन किया तो ये इंक्लूसिविटी के फीचर्स उन्होंने बनाए थे। तो हम लोगों ने भी ऑलरेडी एक्सपर्ट को बुलाया कि ये सब चीजें दिखाई थी। तो एक जो चीजें मैंने दिखाई थी कि रैम्प जो है, रैम्प उसके अंदर प्रॉपर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह जब हम लोग ये बनाते हैं इस तरह की चीजें, तो हम लोगों को देखना है कि हर एक ब्लॉक में लिफ्ट हो गए। पहले वाला गो बैक, आई थिंक वी मिस समथिंग, बैक एक मिस हो गया मेरा। कैन वी गो बैक वन स्लाइड? नो नो, आई थिंक यू गॉन 2 स्लाइड्स बैक। एक नेक्स्ट, हाँ ये वाला करेक्ट, विल स्टे। ओके, इसमें आप जो देखेंगे कि कभी कभी ऐसे होता है कि हर एक ब्लॉक में लिफ्ट रहना चाहिए और उसमें ब्रेल की फैसिलिटी भी रहना चाहिए कि जिससे बच्चा पढ़ पाए कि क्या वहां पर लिखा है। ओके, कहीं से भी कहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक जो है देखा होगा सबसे नीचे जो है टॉयलेट के अंदर उन्होंने ग्रैब बार बनाया हुआ है। कई सारे व्हील चेयर वाले लोग हैं उनको उठने में बड़ी दिक्कत होती है, तो टॉयलेट के पास में ये जो ग्रैब बार है ये बहुत यूजफुल है। और इसी तरह के ग्रैब बार अगर कोई आदमी है आपके घर में भी हो, मान लो कोई एजड बंदा है, उसके पैर में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो आप देखेंगे कि इस तरह का अगर ग्रैब बार आपने लगाया तो ये बहुत यूजफुल है। और ये ऑलरेडी आजकल मार्केट में आ गए हैं, कम मिलते हैं लेकिन ये मिलते हैं। तो जिन लोगों के घर में पेरेंट्स हैं या कुछ और हैं या वो खुद ही उनको मान लो उठने में नीज में प्रॉब्लम है, आजकल ओल्ड एज में नीज की प्रॉब्लम बहुत लोगों की होती, तो इस तरह का आप ग्रैब बार देखेंगे काफी यूजफुल है। तो दो तरह के ग्रैब बार हैं, एक तो वर्टिकल वाला आप देख रहे हैं सबसे नीचे और एक हॉरिजॉन्टल वाला है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट, थोड़ा सा आदमी के फ्लेक्सिबिलिटी हो तो शायद हॉरिजॉन्टल वाला अच्छा रहेगा, और कई लोगों को वर्टिकल वाला भी पसंद है। तो दोनों टाइप के ग्रैब बार जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड। जो लेक्चर हॉल वगैरह हमने बनाए थे वो इस तरह से बनाए थे कि सब जगह से आप किसी भी जगह से कहीं भी आप उसको एक्सेसिबल कर सकें, ये आइडिया है। ऐसा कोई जगह नहीं रहना चाहिए कि जहां पर हैंडीकैप जो व्हील चेयर वाला बंदा है इसी को किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े कि भाई मुझे उतार दो या मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। वो अपने को खुद को उसको चलते आना चाहिए। तो आइडिया यही है कि वो आत्मनिर्भर बने और अपना काम ये खुद से कर सके। हमारा पर्पज एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइडिंग है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट वन। इसी तरह बाकी भी जो ट्यूटोरियल ब्लॉक्स हैं ये सब भी आपस में कनेक्ट रहना चाहिए। मतलब ऐसा कोई हिस्सा नहीं रहना चाहिए बिल्डिंग का कि वहां से उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते आए,
he should be able to go from any academic place to any other academic place. कोई भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ जो भी जगह छोटी वहां उसको किसी की मदद मांगनी पड़ेगी, और हम नहीं चाहते कि किसी को किसी की मदद मांगना पड़े, उसको खुद को अपने हिसाब से काम करते आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह जो एक्सेसिबल टॉयलेट्स हैं, मैंने तो एयरपोर्ट पे देखे हैं कई सारे जगह एक्सेसिबल टॉयलेट्स बने हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मैंने 10 या 15 साल पहले देखे थे इस तरह के टॉयलेट नहीं थे, लेकिन आजकल तो मोस्टली एयरपोर्ट पे आ गए हैं इस तरह का। तो हम लोग कानपुर में भी यही किया IIT में हमने। ओके, इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह हमने देखा है कि जो इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जाने के लिए भी रास्ता ऐसे होना चाहिए कि व्हील चेयर वाला आदमी बिना किसी की मदद लिए खुद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। ये हमारा हमेशा पर्पज रहता है, ये हम लोग इसको करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह हम लोगों ने फैकल्टी बिल्डिंग में किया था कि कहीं से भी कहीं अगर उसको जाना है तो वो वहां पर जा सकता है। ये फैकल्टी बिल्डिंग में भी जाने के लिए रास्ता बना है, फोटोग्राफ वहीं के लिए है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह हमारा डीन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफिस है, और ये तो राजीव मोटवानी बिल्डिंग, ये तो नई बिल्डिंग है कंप्यूटर साइंस वाली यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी तरह के बनाए हुए, अच्छा हर जगह आप देखिए साइड में जो है हमने ऐसा दिया है रेलिंग टाइप की, कि लोग व्हीलचेयर वाला उसको पकड़ के ऊपर चढ़ सके। इससे होता है ना कि उनको फिसलने वगैरह का खतरा नहीं रहता। तो दिस वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन ऑल ऑफ द बिल्डिंग्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस बिल्डिंग है, इसमें भी जो है साइड में रैंप दिया हुआ है। क्या है ना, कभी कभी बारिश में इधर उधर रैंप टूट जाते हैं तो हमेशा फंक्शनल नहीं रहते, बट वी ट्राई टू मेक श्योर कि ये सब अवेलेबल रहे ठीक ठाक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये वाली तो नई बिल्डिंग आई है इमेजिंग वाली, तो ये वाली है, और NWTA बिल्डिंग है हमारी। NWTA बिल्डिंग में भी उन्होंने साइड से रास्ता दिया हुआ है। तो आई वॉज ऑल्सो हेड ऑफ NWTA जस्ट बिफोर हमारे रिटायरमेंट, तो यहाँ पर भी उन्होंने फुल एक्सेस दिया था करने के लिए। ये NWTA बिल्डिंग हुई। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह ये जो हेलीकॉप्टर बिल्डिंग है और ये बायो साइंस की बिल्डिंग है, यहाँ भी देखेंगे कि रैम दिया हुआ है, और ये जो रैम के स्लोप हैं ये भी काफी इस तरह के दिए कि काफी छोट, मतलब स्लोप इज लाइक 1:30-40, इस तरह की काफी हाई स्लोप दिया, लो स्लोप दिया, मतलब कि आराम से कोई व्हील चेयर वाला चला जाए। ओके, और उसको सीढ़ियों से नहीं जाना पड़े। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो न्यू कोर लैब है ये वहां पर है जहां पर हमारे फर्स्ट ईयर के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लैब जैसे केमिस्ट्री लैब हुआ, फिजिक्स लैब हुआ, वहां पर है, तो वहां पर भी उनको रहना चाहिए। तो ये वहां पर भी कि फर्स्ट ईयर के सब बच्चों को मिल जाता है। अब इसी तरह गर्ल्स हॉस्टल है, तो गर्ल्स हॉस्टल में भी ये वाला है, और जो नई गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग बनी हुई है, अभी बनी है, पिछले 1 आध साल में बनी है शायद, उसमें भी ये सब फैसिलिटी हम लोगों ने दी है। उसका फोटो नहीं है लेकिन वहां पर भी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो चीज मैंने पहले बताई ये तो था इंक्लूजन, और इस तरह का इंक्लूजन कि एक्सेसिबिलिटी टू बिल्डिंग्स और एक्सेसिबिलिटी टू लैब स्पेस। ओके, तो एक बिल्डिंग मतलब एक तो हॉस्टल टाइप का हो गया, एक हमारा एकेडमिक एरिया में सब जगह पे होना चाहिए, और एक जगह मतलब मैंने पास स्पोर्ट्स वाली फैसिलिटी सब जगह रहना चाहिए। अब लेकिन जो लोग हैं फिजिकली चैलेंज, उन लोगों को इंक्लूजन बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। तो जिस तरह से उसमें सुना होगा आपने, वैसे तो एक ओलंपिक गेम्स रहते हैं और इसी तरह स्पेशल ओलंपिक्स भी रहते हैं, यहाँ पर वो व्हील चेयर वाले लोगों के भी होते हैं, तो वो वाली भी इवेंट्स होती हैं। तो सिमिलरली IIT कानपुर में ये भी हमारा कंसेप्ट था कि हम लोग जो स्पोर्ट्स का फेस्टिवल करते हैं स्टूडेंट्स का, उसमें हम लोग कुछ इनिशिएटिव करें कि जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए भी करें। तो ये भी उड़ान 2017-18 के आसपास हुआ था, बीच में कोरोना की वजह से खत्म हो गया था, बट आई थिंक इट इज स्टार्टेड नाउ।
उसमें ये है कि स्पोर्ट्स अमंग स्पेशली एबल्ड पीपल, मतलब व्हील चेयर वगैरह वाले। ओके, तो हम यही चाहते हैं कि वो लोग खुद भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें उनके हिसाब से जो वो स्पोर्ट्स कर सकते हैं। ओके, और ऐसी चीजें कर पाए जो शायद उनके लिए पहले करना पॉसिबल नहीं था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोगों ने हीरा सिंगल मैम को बुलाया था उड़ान 2018 के लिए, तो शी इज ऑल्सो फिजिकली चैलेंज पर्सन, और कई सारे कॉलेज स्कूल के बच्चे आए थे और कई सारे इवेंट्स हम लोगों ने किए थे उड़ान में। नेक्स्ट स्लाइड। ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं ये बास्केटबॉल टाइप से इसमें खेल रहे हैं, व्हील चेयर के अंदर खेल रहे हैं। इसमें शायद AITH के भी कुछ लोग होंगे, प्रीवियस वाले AITH की टीम ने पार्टिसिपेट किया था एंड दे आल्सो डिड फेयरली वेल। तो और भी कई सारे लोगों ने किया था। ओके, नेक्स्ट लाइन। तो ये तो जो न्यूज़पेपर में कुछ कटिंग, ये तो पुरानी कटिंग्स हैं। ओके, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब एक जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन का मतलब ये होता है और इंफॉर्मेशन लड़कों से कनेक्ट करें और ये इंफॉर्मेशन जो टीचर्स के पास जाए। एक्चुअली क्या है ना, जैसे कोई डिफरेंटली एबल है और उसकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, तो टीचर मान लो बड़ी क्लास हैंडल कर रहा है तो उसको पता नहीं रहता कि ये जो स्टूडेंट है ये डिफरेंटली एबल्ड है। ओके, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे को हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं कानपुर के, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी। आई थिंक आई विल टेल दिस स्टोरी। एक क्या गए कि एक बच्चे ने एक दिस गाय वाज अ डेफ। ओके, तो उसने एक अपना हाथ खड़ा किया बिकॉज ही वांटेड टू आस्क सम क्वेश्चन। तो वहां पर एग्जाम की बात थी और जो टीचर हैं उन लोगों ने उसको बोला चुप हो जाओ, मतलब हाथ नीचे करने के लिए बोला। अच्छा, ये बच्चा तो डेफ था तो उसको सुनाई नहीं दिया। फिर भी उसने हाथ खड़ा खड़ा किया 2-3 बार, उसको कोई जरूरत थी किसी काम की। तो टीचर आए और उन्होंने उसको एक चांटा मार दिया। ओके, ये सच सच सत्य कथा है। तो फिर वो बच्चा जो था वो तो डेफ था, तो उसको समझ में ही नहीं आया कि टीचर ने मेरे को क्यों मारा। तो फिर बाद में टीचर को पता लगा कि भाई ये तो डेफ बच्चा है, इसको मैं कह रहा था और ये कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उसको। तो इस तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, अगर वो टीचर्स को पहले से पता लग जाए कि भाई इस तरह का है तो लोग उसके लिए ऑलरेडी तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किया था। इसका मतलब होता है एकोमोडेशन। ओके, तो एकोमोडेशन के लिए ये है कि अगर किसी स्टूडेंट की स्पेशल नीड्स हैं तो हम स्पेशल नीड्स को ऑलरेडी टीचर्स पे कम्युनिकेट कर दें और टीचर्स को ऑलरेडी सेंसिटाइज हो गए हैं कि भाई इन लोगों को कैसे करते हैं हम लोग, सो देन वी कैन अकोमोडेट। ओके, तो इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो हम लोग किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब कि सब लोगों को वो फैसिलिटी मिले, लेकिन वो फैसिलिटी उनको कैसे पता लगेगी कि ये बच्चे की स्पेशल नीड है। तो इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों को ये ऑलरेडी रहे, टीचर्स को इंफॉर्मेशन कि इस तरह की ये स्पेशल चीज है, सो दिस इज व्हाट दे विल डू। तो बेसिक पर्पस उसका ये है कि जो वहाँ पर टीचर्स रहेंगे दे विल रियली अंडरस्टैंड कि मान लो कोई डेफ है तो उसको कोई स्पेशल नोट्स वगैरह चाहिए। सो दिस वी ट्राइड इन IIT कानपुर कि उनके लिए टीचर्स वैसे नोट देते नहीं थे, लेकिन उन लोगों के लिए उन्होंने स्पेशल अरेंज किया था। ओके, तो ये हम लोगों ने एक ऑटोमेशन टीम बनाई है जिन्होंने ये डेवलप करना है एकोमोडेशन सॉफ्टवेयर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ये पहले तो डेटा कलेक्ट करता है और ये हम लोगों ने इंटीग्रेट किया स्टूडेंट डेटाबेस से। ओके, और इसी को हमने किया है हेल्थ सेंटर एक्सेस में, क्योंकि मान लो कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए फिजिकली ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है,
तो ऑलरेडी जब डॉक्टर जाए तो उसको पता लगे कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, ओके। और हेल्थ सेंटर की कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ हेल्थ सेंटर वाले एक्सेस कर सकते हैं। तो भले ही डेटाबेस में है, लेकिन हमने इस तरह से डिजाइन किया है सॉफ्टवेयर को कि ओनली डॉक्टर्स कैन सी द हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो डॉक्टर के पास हिस्ट्री वगैरह चीजें पता लग सकती। और इस तरह से ऑनलाइन क्वेरी का, रिपोर्ट जनरेशन का भी सिस्टम बनाए हैं, ओके। और मतलब वेब एक्सेसिबिलिटी के वगैरह के ऊपर काम किया, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो विजुअली चैलेंज है, इस तरह से वेबसाइट बनाए कि वो लड़के उसको आराम से देख सकें। तो दिस वाज अनदर थिंग वी हैड ट्राइड इन दिस पीपल, दिस accommodation form. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये जो है इस तरह का फॉर्म दिखा रहा है कि हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम ऑलरेडी देयर इन सीड ऐप, सपोज देन मे बी आई हैव एक्सेस टू फुल इंफॉर्मेशन। मान लो कोई दूसरा है, उसको पार्शियल इंफॉर्मेशन। तो इवन अलग अलग टाइप के लेवल्स उन लोगों ने बनाए थे कि किस लेवल का एक्सेस किसको मिलेगा। सो आई थिंक दिस वाज समथिंग विच वाज इम्पोर्टेंट इनोवेशन विच वाज देयर। मतलब सबको सब चीजें मिलेंगी इस तरह का नहीं है, बट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, डेटाबेस में है, लेकिन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू स्पेसिफिक पीपल, ओके। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। शायद लास्ट ही हो गई है। इस तरह का हमारा रिकमेंडेशन फॉर्म था, लेकिन मैं एक दो चीजें और बता पाऊँ जो मे बी आई हैव नॉट रियली बीन एबल टू पुट इन दिस स्लाइड, बट वो मेरे दिमाग में है ऑलरेडी। और वो है इस टाइप के मॉडल्स बाकी स्टैनफोर्ड में और जो लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया है, उन लोगों ने बोला था कि भाई 4 पिलर्स हैं। एक हमारे पिलर्स जैसे हैं स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर्स हैं। तो हम लोग उनमें से आइडेंटिफाई करें कि उन लोगों को कितनी, मतलब ये बेसिकली ये जो डिफरेंटली एबल्ड सेल्स होता है, इट इज नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, इट्स फॉर एवरीबडी इन द कम्युनिटी, मे बी स्टूडेंट्स, मे बी स्टाफ, मे बी फैकल्टी, उन लोगों के लिए भी है। तो उन लोगों की एक तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, दूसरा है बैरियर फ्री बनाने का, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, और एक उनका जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो था सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन ये होता है कि बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको पता लगे कि इन लोगों की क्या स्पेशल नीड्स हैं। तो हम लोगों ने ये जो ऑलरेडी सेशंस किए थे आईआईटी कानपुर में, जैसे पहले वाले भी किए थे वर्कशॉप में या बाकी जगह, उसका पर्पस ये था कि लोगों को बताएं। जैसे हम लोगों ने किया था कि ब्लाइंड बच्चों को क्या दिक्कत होती है, तो वो कई सारे ब्लाइंड फोल्ड्स लिए थे, और बाकी जो जनरल लोगों को बोला, भाई ठीक है तुम ब्लाइंड फोल्ड लगा के फिर एक जगह से दूसरी जगह जाके दिखाओ। तो फिर उन लोगों को पता लगा कि ब्लाइंड लोगों की क्या समस्याएं होती। तो इस तरह के, इसी तरह हमने लोगों को बोला था कि भाई व्हील चेयर में क्या दिक्कत होती है, तो लोगों के हाथ बांध दिए या पैर बांध दिया, कुछ किया, फिर बोला आप करके दिखाओ तुम। तो देन पीपल बिकेम सेंसिटाइज। एक इम्पॉर्टेंट इशू था सेंसिटाइजेशन। और जब वो लोग सेंसिटाइज हो गए, देन दे वर रियली एबल टू हेल्प द पीपल इवन मच मोर। तो एक जो है कंटिन्यूस एजुकेशन, क्योंकि क्या है ना, बच्चे एक चले जाते हैं, दूसरों को पाता रहता है। इसी तरह से फैकल्टी और स्टाफ भी थोड़े बहुत रोटेट होते रहते हैं। तो इफ यू हैव अ रेगुलर सेशंस व्हिच आर ऑन सेंसिटाइजेशन, दे आल्सो हेल्प क्वाइट अ लॉट। एक हमारा और इशू था आईटी में, वी रियली डू नॉट हैव एक्सपर्ट्स हु डील विथ पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, but there are other institutions in the country, okay, who are specialists in dealing with people who are differently able. जैसे मद्रास में इंस्टीट्यूशन है और भी कई जगह हैं जो इन लोगों से डील करते हैं। उन लोगों को हमने स्पेशल लेक्चर्स अरेंज कराए थे या वर्कशॉप अरेंज कराई थी और कैंपस कम्युनिटी के लिए, कि वो लोग लोगों को सेंसराइज करें कि इस तरह से क्या चीजें हो सकती। एंड देन वी फाउंड दैट दिस सेंसराइजेशन सेशन इज वेरी वेरी यूजफुल, ओके। और मैं ये बताऊं कि मुझे आईआईटी कानपुर में रिटायर हुए तो 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो 3 साल पहले मतलब बीटेक में थे और अभी पास आउट कर रहे थे। अभी भी मेरे पास उनके फोन आते रहते हैं लोगों के, मतलब पूरा कोरोना पीरियड गुजरा, उससे पहले भी मुलाकात हुई थी। दे आर स्टिल इन टच विथ मी। और ऐसे भी लोग हैं जो इंदौर में आए थे मुझसे मिलने के लिए, मुझसे आके मिले स्पेशली। सो देर आर पीपल लाइक दिस। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आप करिए, आप प्रयत्न करिए, और आप डेफिनेटली लोगों से कनेक्टिविटी इंप्रूव करिए, सेंसिटाइज करिए, एंड मेरे ख्याल में अच्छा हो जाएगा।
और न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करिए, जो भी चीजें अवेलेबल हैं, आई थिंक पीपल विल एबल टू डू गुड जॉब। और बेसिकली ये है कि उन लोगों को दे शुड बी मेड टू फील इंडिपेंडेंट, और आप उनको मौका ही दीजिए कि भाई अपने आप से काम आप कैसे कर सके। बेसिकली मेरा ये है, यू हैव टू टीच अ मैन हाउ टू फिश, यू डोंट गिव हिम अ फिश, यू टीच हिम हाउ टू फिश। तब वो जो है उसका जिंदगी उसी तरह से अच्छी होगी। तो व्हाट आई वांट इज कि ऑल द पीपल आर फिजिकली चैलेंज्ड, आई थिंक AITH है, बाकी और भी लोग हैं जो इस टाइप के लोगों से डील करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सेंसिटिविटी से डील करें, आपको अगर अवेयरनेस हो, तो आई थिंक यू कैन डू अ गुड जॉब। ओके, I think maybe next slide should probably be the last slide. Okay, can you have go to the next slide? Next slide, please. Okay, ये भी फॉर्म है वो सेम वाला। Okay, next slide. Basically forms here. Okay, so this was about the end of the slide. Okay, so उसको डॉक्टर शर्मा ने बोला था कि भाई you try to put it in for about 1 hour, maybe about 5 or 10 minutes for question answer or whatever is required. So I think maybe I will stop here, and any question answer anything, I'll be more than happy to help. Okay. I think I will probably also start my video so you can probably see my face, so you know who I am. मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, मैं जीता जागता इंसान हूँ। Okay, sir. Any questions will be? हाँ, If okay, there is sir. question from participant side, please ask. I think no question from participant side, sir. Okay, sir. So I think whenever you tell, I mean, I can stay for whatever, or maybe I'll leave whenever you tell me to. yes, sir. So we can conclude here, sir. Thank Okay, you. okay. Okay, thank you. Thank you, sir, for sharing your expertise and insights during our faculty development program. Your session was enlightening and provided us with valuable knowledge and innovation approaches. We deeply appreciate your time and dedication. Your contribution has greatly enriched our professional growth. Thank you once again, sir, for your invaluable input. Thank you, sir. Okay, thank you.